So this is our 8th video for the Prelims Basket. So let's get straight into the first fact for today, that is about CITES. Quickly CITES के बारे में देख लेंगे. CITES क्या है? Basically it is a convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora. ये क्या है? Basically this was an international agreement and it is an agreement to which states and economic integration units, regional economic integration units adhere to voluntarily. ठीक है, CITES जो है ये ड्राफ्ट किया गया था as a result of a resolution that was adopted in 1963 at a meeting of the IUCN. So remember that it was actually set up based on a resolution that was adopted at a meeting of the IUCN. Remember this fact, ठीक है, ये important है. IUCN के एक मीटिंग के में जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, that formed the basis of this CITES. Basically अगर देखा जाए तो this CITES is entered into force in 1975. So sometimes this year becomes important. There might be a statement given wherein the year of establishment or the year in which these kind of conventions came into force might be given. There might be statements in it. So remember one thing, 1963 में एक IUCN के मीटिंग, IUCN का जो मीटिंग था, it was drafted as a result of that, and 1975 में then it came into force. Right? Currently about 183 parties or so are there. अब ये जो CITES है, इसका एम क्या है? इस CITES का एम है to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. इसका मतलब ये है कि अगर ये कुछ वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट स्पेसिमेंस का इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है, सो दैट ट्रेड शुड नॉट एंडेंजर देम, शुड नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल. ठीक है, दैट इज व्हाट इट एम्स टू मॉनिटर. इट वांट्स टू इंश्योर. सो कीवर्ड इज इंटरनेशनल ट्रेड. That they want to ensure that the international trade does not threaten the survival of wild animals, trade in wild animals and plants, right? Remember that. Secretariat जो है that is administered actually by the UNEP. ठीक है, the CITES Secretariat is administered by the UNEP and the Secretariat, the CITES का Secretariat है, that is located in Geneva. It's located in Geneva, Switzerland. So there is a conference of parties to the CITES. CITES का एक conference of parties है, and ये जो conference of parties to the CITES है, this is the supreme decision making body of this convention. So basically CITES wants the aim of CITES is to regulate इंटरनेशनल ट्रेड दैट वी टॉक्ड अबाउट, एंड उसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है टू सेफगार्ड स्पीशीज फ्रॉम गेटिंग ओवर एक्सप्लॉइटेड. सो दैट इज व्हाट CITES एम्स टू डू. एंड ये जो CITES है, दिस इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट इन विच स्टेट्स एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस अडहियर वॉलंटरीली. ठीक है, दे कम वॉलंटरीली. अब जो स्टेट्स अग्री कर चुके हैं, the states that have agreed to be bound by the convention, that have those states which have joined the CITES are known as parties. They are parties to the CITES. ठीक है, and although CITES is legally binding on the parties, it does not take the place of national laws. जो CITES साइन कर देता है, जो पार्टी CITES ज्वाइन कर लेती है, और the states that have joined CITES, CITES is binding on them, but उनका अपना national law होता है regarding this same matter. So CITES does not take the place of those national laws. It does not take the place of national laws. Okay, remember that. That is important. That this does not take the place of national laws. पर ये क्या करता है? Rather, it provides a framework जो हर पार्टी को respect करना पड़ता है, and which has to adopt its own domestic so each party has to adopt its own domestic litigation to ensure that CITES is implemented at the national level. So
साइट्स में बेसिकली देखिए अपेंडिक्स, 3 अपेंडिसेस है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3, एंड they are lists of species that are actually given different levels, or they are, इस अपेंडिक्स के हिसाब से इट इज टोल्ड कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ओवर एक्सप्लॉयटेशन. अपेंडिक्स 1 की अगर हम बात करें तो अपेंडिक्स 1 लिस्ट्स द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज. सो ये जो लिस्ट है दैट इज द लिस्ट ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज अमंग द साइट्स लिस्टेड एनिमल्स और प्लांट्स. तो साइट्स का एक लिस्ट है जिसमें देयर आर एनिमल्स एंड प्लांट्स, समथिंग लाइक जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड हैपेंस. सो उसमें से जो मोस्ट एंडेंजर्ड है दे आर इन अपेंडिक्स 1. इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल जायंट पांडा इज वन एग्जाम्पल, एंड गोरिल्लाज, सी टर्टल्स, ऑर्किड्स, मोस्ट लेडी स्लिपर ऑर्किड्स. करंटली 931 ऐसे स्पीशीज हैं जो इस लिस्ट में आते हैं. और जो स्पीशीज का नाम इस अपेंडिक्स 1 में दिया गया है दे आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन. एंड साइट्स क्या करता है, साइट्स prohibits any kind of trade on them. So any kind of international trade on them is prohibited. Okay. Except, so this kind of a trade is prohibited except when the purpose of the import is not commercial. हो सकता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए you're taking the organism or the species from one place to another from across border, but then that is not for the purpose of commerce, or it's not commercial. And then there is this appendix 2 that gives a list of species जो अभी फिलहाल necessarily threatened extinction से नहीं, they are not threatened with extinction, that अभी वो necessarily extinct नहीं होने के कगार पर नहीं है, but वो extinct हो सकते हैं या वो threatened हो सकते हैं, they may become threatened अगर अगर जो ट्रेड हो रहा है उनमें that is not controlled. So if the trade is not closely controlled, they may get threatened with extinction. So ये वो organisms हैं या वो species हैं जिसको closely monitor किया जाएगा, जिनका trade जो है it's not prohibited, but उसको इनका जो trade हो रहा है, इन organisms का जो trade हो रहा है, इन species का जो trade हो रहा है, उसको closely monitor किया जाएगा. Most CITES species are listed in this appendix. Like there are lions, there are American alligators, mahogany, बहुत सारे corals, paddlefish. Currently 34,000 से भी ज़्यादा species इसमें listed हैं. And this also includes look-alike species. यानी कि there are certain species whose specimens in trade look like those of species that are listed for conservation reasons. यानी कि कुछ species ऐसे होंगे जो जिनके ऊपर strict conservation करने के बारे में बोला गया है, पर उसके जैसे दिखने वाले species are also included in this appendix 2. तो यहाँ पर कोई परमिट की जरूरत नहीं है. इस केस में अपेंडिक्स 1 में परमिट की जरूरत है, दैट टू फॉर रिसर्च पर्पसेस, नॉट फॉर ट्रेड. बट अपेंडिक्स 2 में देयर इज नो import permit necessary for these species. Although a permit is needed in some countries that have taken stricter measures than CITES requires, but वो countries का अपना discretion हो सकता है. CITES की तरफ से there is no import permit that is necessary, just उसको closely monitor किया जाता है. Appendix 3 में Appendix 3 is a list of those species that are included at the request of a party that already regulates trade in the species, and that party needs the cooperation of other countries to prevent illegal exploitation. So let us say एक party है that has actually signed this CITES. ठीक है, any country we can say, let's say India, and then there is another. Let's say India regulates अपने खुद से, India regulates trade in one particular species, whatever species X. ठीक है, अब इंडिया को अगर
ये इंश्योर करना है कि इसमें इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड ना हो, ये ऑर्गेनिज्म में जिसको हम यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिसका ट्रेड हम रेगुलेट करना चाहते हैं. सो इट नीड्स द कोऑपरेशन ऑफ अदर इंटरनेशनल एंटिटीज. तो वैसे स्पीशीज जो हैं इस थर्ड लिस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ पार्टी जो ऑलरेडी एक स्पीशीज का ट्रेड रेगुलेट करता है एंड उसको कोऑपरेशन की जरूरत है फ्रॉम अदर्स. इट्स नॉट नेसेसरीली साइट्स का दिया हुआ, ये कंट्री खुद से पार्टी खुद से कर रहा है. सो पार्टी विल टेल साइट्स कि आप इसको इंक्लूड कर दीजिए ताकि जो मेंबर्स हैं इस पे ध्यान दें. सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल. अभी 147 ऐसे स्पीशीज हैं. मैप टर्टल्स, देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ बीटल्स एज वेल, केप स्टैग बीटल्स. ठीक है, अब यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ स्पीशीज दैट आर लिस्टेड इन दिस अपेंडिक्स 3 इज अलाउड ओनली ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ अप्रोप्रिएट परमिट्स और सर्टिफिकेट्स. तो यहाँ पर परमिट्स और सर्टिफिकेट्स चाहिए. ठीक है, परमिट्स एंड सर्टिफिकेट्स आर नीडेड. हियर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी परमिट. अपेंडिक्स 3 में इंटरनेशनल ट्रेड इन द स्पीशीज दैट आर लिस्टेड, दोज 147 और सो स्पीशीज दैट हैव बीन लिस्टेड इन दिस अपेंडिक्स 3, अगर उनमें ट्रेड करना है तो देन दैट इज अलाउड ओनली इफ अप्रोप्रिएट परमिट्स एंड सर्टिफिकेट्स आर गिवन और आर शोन. अब एक बेसिकली कोई अगर एक स्पीशीज को ऐड करना है या रिमूव करना है इनटू अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2, दैट या फिर मूव करना है फ्रॉम हियर टू हियर, दैट कैन बी डन ओनली बाय दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ साइट्स. ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ साइट्स. 3 की बात करें तो अपेंडिक्स 3 में से स्पीशीज कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट एनी टाइम बाय एनी पार्टी यूनिलैटरली. लेट अस से इंडिया कहता है कि हमें स्पीशीज एक्स को प्रोटेक्ट करना है. अगर अब इंडिया कहे कि हम अब ये हटाना चाहते हैं ये रेगुलेशन, तो देन इट कैन यूनिलैटरली रिमूव दैट फ्रॉम द लिस्ट. ठीक है, सो दैट अपेंडिक्स 3 यूनिलैटरली इट कैन बी डन बाय द पार्टी, बट बाकी अपेंडिक्स 1 एंड 2 के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का अग्रीमेंट चाहिए. Next, very quick fact. See, water supply and sanitation facility for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses. So what is basically the requirement? WHO का एक requirement है about how much water per person per day is needed to ensure that the most basic needs are met without causing severe health conditions. So how much of water is that? How much of water is the adequate amount or is needed? So basically WHO says between 50 to 100 liters of water per person per day are needed to ensure the most basic needs are met. यानी कि पर्सनल एंड डोमेस्टिक यूजेस के लिए. फॉर these uses are for drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation, personal and household hygiene, ये सब को मिला के पर पर्सन पर डे जरूरत होती है 50 to 100 liters of water, okay, every day per person, ताकि जो बेसिक नीड्स हैं एक इंसान के वो मीट किए जा सके और कंसर्न्स जो है हेल्थ कंसर्न्स अराइज ना हो. ठीक है, अब तो वो लोग जो हम कहते हैं कि lack access to clean water, those people who lack access to clean water actually get to use only about 5 liters a day. Okay, that is very less. So those people who get to access 5 liters a day, not drinking water, it is for the entire, for the ordinary use of drinking, personal sanitation, washing clothes, food preparation, ये सब के लिए requirement कितना है 50 to 100 liters. So remember 50 to 100 liters per head per day is the requirement as prescribed by the WHO. Next, very quick fact from 8th standard NCERTs of geography. It is the 8th standard NCERT of geography. उससे ये एक fact, ये एक excerpt है, and from there we will be able to gather some facts, important ones. ठीक है, इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं यहाँ पे. इंटरक्रॉपिंग बेसिकली क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग इज अ मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स इन प्रॉक्सिमिटी. तो 2 और more क्रॉप्स को प्रॉक्सिमिटी में ग्रो किया जाता है. ठीक है,
एंड इसका कॉमन गोल है कि ग्रेटर ईल्ड प्रोड्यूस करना, ठीक है. So the common goal of intercropping is to produce a greater yield on a given piece of land by making use of resources or ecological processes that would otherwise not be utilized by a single crop. This intercropping benefits are that it acts as an insurance against failure of crop. Let's say कोई एक crop fail हो गया, तो दूसरा crop at least is there. So it acts as an insurance against failure of crop in an abnormal year. Moreover, क्या होता है, land utilization जो है वो improve हो जाता है with the use of more than one crop. The land utilization improves with the use of more than one crop. The yield and income levels are also higher. ठीक है. अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि जो न्यूट्रिएंट अपटेक है, that gets balanced. So it balances the nutrient uptake since the same nutrient is not depleted over and over again. अलग अलग जो क्रॉप्स होंगे they take up different nutrients अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो उस तरीके से प्लान करके ही प्लांट करना पड़ता है to see to it that this nutrient balance is maintained and different nutrients are taken from different levels of the soil. So ये जो plants हैं और ये crops हैं वो अलग अलग levels of nutrients जो है वो take up करती हैं from the soil. So these crops take up different levels of nutrients from the soil and इस तरीके से soil को time मिल जाता है natural recovery करने का. Nutrients can be recovered by the soil. So there is a natural recovery of the soil, right? So different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash or runoff. पर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है दैट इज अनइकोनॉमिकल एंड अनडिजायरेबल ड्यूरिंग राबी के लिए ये अनडिजायरेबल है. सो राबी क्रॉप्स जनरली इंटरक्रॉपिंग में नहीं प्लांट किए जाते हैं. दे आर नॉट कंसिडर्ड फॉर इंटरक्रॉपिंग, राबी क्रॉप्स. बट खारिफ क्रॉप्स की अगर हम बात करें, दे आर ऑफन कंसिडर्ड फॉर इंटरक्रॉपिंग. So some kharif crops that are considered for intercropping are pearl millet, red gram or horse gram, kidney bean, cowpea. Fine. So this is what quickly intercropping is. So now if you're given some statements that talk about the benefits of intercropping as compared to the conventional method of monocropping, we will be able to say that, let's say there is a statement that says that it acts as an insurance against failure of crop in an abnormal year. That is true. And secondly, if there is a statement that says that it balances nutrient uptake from the soil, that is also true. And thirdly, there is a statement that says that better land utilization takes place and a higher total output takes place. That is also correct. So we will be able to have an idea. The next fact for today, and rather important one, is which of the countries are members of the regional coalition that we call Quad, that is Quad. कैसे याद रखेंगे इसको? देखिए ये members हैं, ठीक है. India is there, Japan is there, USA and Australia. So this forms a quadrilateral, right? Remember it like this. If you see this image, we will be able to remember the members of Quad. India is a member of this Quad. देखेंगे Quad क्या है? It's actually it is Quad is also otherwise known as the Quadrilateral Security Dialogue. ठीक है? And ये basically एक strategic security dialogue है between these four nations. That is remember India, Japan, USA and Australia, right? Remember these. So basically all four nations have this common ground of being democratic nations. India, Japan, USA, Australia, remember these names, these members. ये quadrilateral से remember कर लीजिएगा. And basically they are democratic nations and they find common interests in unhindered maritime trade and security. ये जो quadrilateral security dialogue है, that is also known as Quad, is a strategic security dialogue between USA, India, Japan and Australia that is maintained by talks between the member countries. The dialogue was initiated in 2007 by Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Alright, so ये सारी चीजें हैं, but
what is important for us is also this, that this dialogue was paralleled by joint military exercises of unprecedented scale that was titled the Exercise Malabar. So ये जो arrangement था, ये diplomatic and military arrangement that these countries came up with, basically this was a response to increased economic and military aggression of China. So it was to counter the Chinese economic and military aggression. Remember this. Okay. So what happened? This idea was actually initiated by this Japanese Prime Minister in 2007. But ये idea आगे नहीं बढ़ पाया because for some reason Australia pulled out of it. That much background is not needed. But just an idea. US Quad को एक अपना बहुत important एलिमेंट मानता है अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए फॉर अ फ्री ओपन एंड रूल्स बेस्ड ऑर्डर इन द फेस ऑफ एन अग्रेसिव एंड एक्सपेंशनिस्ट चाइना इन द रीजन. So Australia say for some reason Australia pulled out of it, but in 2017 during the ASEAN summit in Manila, all the 4 members again agreed to revive this particular quad. And one more thing that would be good to keep in mind is that the quad recently pledged to respond, recently in the sense 2021 के time पे, the squad pledged to respond to COVID-19, and there was a first Quad Plus meeting that was held, and that included representatives from New Zealand, South Korea, and Vietnam to work on its response to it. But remember, when just Quad is said, they are just those 4 countries, that is India, Japan, USA, and Australia. Okay. So for today, these are the facts that we would be able to discuss in this prelims basket. We will continue it in the next discussion. So it would be helpful if we keep revising these facts again and again, because there are certain facts that we might tend to forget with time. So it is only good if we keep revising these facts.